Good morning everyone. Today we will discuss the mock test number 14th of Gurukul Preliminary Examination Test Series. ठीक अछि एठी हमें MCQ discussion करिबा as usual जेमती हमें सबु week करे जोगुडा factual question रहउची. Good morning everyone. जोड़ा factual question रहउची ताकू हमें direct option देखि कि next हमें proceed करिबा और जोगुडा conceptual question रहउची. For the conceptual ones, we will discuss extensively. Okay. And I hope समस्ते mock test attempt करुथिबे. एठी की discussion purpose रे आसीथिबे mock test attempt करिके और जो माने attempt करि नाहंती तो से माने भी discussion join करि परिबे. And जहाँ भी वो information देबी जहाँ भी pointers देबी ताको note down करुथिबे. Notes रे add करिबाकू. First session start करिया पूर्वरु कहि दियंतु audio and video clear अछि कि नाही. Is the audio and video clear? Everything clear to everyone? I'll wait for 30 seconds. If everything is clear, we will proceed. ऑडियो वीडियो क्लियर अछि ठीक अछि पिला माने यस कहउचंदी त मु एबे प्रोसीड करूची 50 टा क्वेश्चन अछि हमें आजि डिस्कस करिबा आ पर क्वेश्चन मु 10 सेकंड्स टाइम देबे जो माने अटेम्प्ट करचंदी ताकर भी रिवीजन नै जिवो जो माने अटेम्प्ट करि नांदे से माने एटी 5 टू 10 सेकंड्स भीतर एटी गोटे अटेम्प्ट नै परिबे भूल हो किछि नै ठीक हो किछि नै मु एठी आंसर एंड एक्सप्लेनेशन बोथ डिस्कस करिवि स्टार्ट करंतु क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहिछि विथ रेफरेंस टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ऊपर क्वेश्चन अछि किछिटा स्टेटमेंट देछि तीनटी स्टेटमेंट देछि पचारछि को स्टेटमेंट करेक्ट अछि एडी क्वेश्चन रीड करंतु एंड 10 सेकंड्स मु दोछि एडी आंसर करंतु कमेंट सेक्शन रे ताबरे मु आंसर कहिबी ओके डिस्कस करिबा फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहिछि द बैटल ऑकर्ड इन नवंबर 1556 between Akbar's forces and Hemu's army एटी देखुथिबे क्वेश्चन गुडा फैक्चुअल अछि हमें डायरेक्ट आंसर ही डिस्कस करिबा विदाउट गेटिंग टू द बैकग्राउंड और एनीथिंग ताबरे हमें सेकंड क्वेश्चन को मूव करिबा सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट कोन कहिछि Hemu's army initially had the advantage largely due to their war elephants clear थर्ड स्टेटमेंट कोन कहिछि अकबर पर्सनली कैप्चर्ड हेमू ऑन द बैटलफील्ड को स्टेटमेंट आ भितरु करेक्ट अछि स्टेटमेंट फर्स्ट हमें देखिबा जोडा कि बिल्कुल ठीक अछि कोन कहिछि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड ऑन 5th नवंबर 1556 5th नवंबर डेट ता भी मने रखिबे क्वेश्चन पचार देई पारे एग्जाम रे कहा कहा भीतर इतला मुगल फोर्सेस और अकबर रीजेंट बैराम खान अकबर फोर्सेस मुगल फोर्सेस अंडर अकबर रीजेंट बैराम खान and Hemu's army. Hemu केतिले Hemu was a Hindu general. He was a Hindu general. Hindu general who served the Afghan Sur dynasty. I hope समस्ते तांकर हिस्ट्री नोट्स रिवाइज करूथिबे काहे ना ए फैक्चुअल क्वेश्चन गुडा जदी बार बार रिवीजन न करबे ताहले बहुत चांसेस अछि कि एग्जाम रे भूल हबो सेकंड स्टेटमेंट देखिबा तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हे गला सेकंड स्टेटमेंट कोन कहिछि सेकंड स्टेटमेंट कहिछि हेमूज आर्मी इनिशियली had the advantage largely due to their war elephants बिल्कुल एटा भी ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एट द स्टार्ट कोन हेतला हेमूज आर्मी वाज विनिंग बिकॉज़ तांकर बहुत गुडे war elephants थिले जो माने कि कोन करथिले फियर कॉज करथिले इन मुगल कैवलरी राइट ओके थर्ड कोन अछि थर्ड स्टेटमेंट कहिछि अकबर पर्सनली कैप्चर्ड हेमू ऑन द बैटलफील्ड एटा इनकरेक्ट अछि अकबर
only 13 years ର ଥିଲେ, he was only 13 years old at the time and he did not personally capture Hemu. तो एटा भूल अछि. आंसर कोन हबो? आंसर हबो 1 and 2. सेकंड क्वेश्चन देखिबा, assertion reason टाइप रो क्वेश्चन अछि. क्वेश्चन रीड करके आंसर करंतु कमेंट सेक्शन रे. सुचिस्मिता राव, दीपांजलि सिन्हा एमाने करेक्ट आंसर देइचंदी. आंसर ए हबो 1 and 2 ओनली. assertion reason टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करंतु. You have 10 seconds. देखिबा, assertion कोन कहै छी, हेमू declared himself ruler with the title of Vikramaditya after capturing Delhi and Agra. Reason तार कोन? हेमू was the chief minister of the Afghan Sur dynasty. हेमू अफगान चीफ मिनिस्टर थिले कोठिकार अफगान रो सुर डायनास्टी. एटा मु ऊपर एबे डिस्कस कली. एक्सप्लेनेशन एबे हमरा देखिबा. हेमू तांकू रूलर भाबरे घोषणा करथिले केबे? इन 1556 कहा परे आफ्टर डिफीटिंग द मुगल्स एट तुगलकाबाद. ठीक अछि. आ तापरे से कहार को टाइटल नैथिले? विक्रमादित्य रो टाइटल नैथिले. एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर एंड जनरल अंडर आदिल शाह सूरी ऑफ व्हिच डायनास्टी? सुर डायनास्टी. ठीक अछि. तो करेक्ट आंसर कोन हबो? किंतु आर तार परफेक्ट रीजन नुहे. कोन पई? आर रीजन होची दीटा देखो ठीक अछि, किंतु आर इज नॉट द परफेक्ट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion because the reason से विक्रमादित्य टाइटल चूज करथिले not because he was the chief minister, it was because he wanted to establish himself as an independent Hindu ruler. तो जेहेतु दीटा जक स्टेटमेंट ठीक अछि, किंतु रीजन टा आरो assertion रो रीजन नुहे. तो आंसर हबो बी. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. आज हमें 50 टा क्वेश्चन डिस्कस करबा. मैच द लिस्ट अछि. रिबेलियन और लिस्ट 1 रे रिबेलियन और थ्रेट्स लिस्टेड हेछि एंड लिस्ट 2 रे आउट से रिबेलियन और थ्रेट्स रो आउटकम्स लिस्टेड हेछि. केयरफुली दीटा जक लिस्ट को देखि कि मैच करंतु. First matching कर सरंतु, then we will move to the options and the explanation. You have 10 seconds. ओके. एबे हमें यार एक्सप्लेनेशन देखिबा. उज्बेक रिबेलियन पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन अछि. जस्ट हमें यार मैच करबा. फैक्चुअली ही क्वेश्चन टा को डील करबा एंड आगु बढ़िबा. उज्बेक रिबेलियन अछि. आरो कोन हबो आंसर? विल बी 3. सप्रेस्ड बाय बैराम खान. रिबेलियंस एंड थ्रेट्स तार आउटकम्स एगुडा सब बार बार निजो नोट्स रु जहां भी हिस्ट्री नोट्स बनै छथि ताकू रिवाइज करूथिबे. तारे जो मैच द कलम क्वेश्चंस गुडा आसुची एगुडा प्रिसाइजली करी हबो, करेक्टली करी हबो. बी रे कोन कहि छी? मिर्जा हकीम्स रिवोल्ट. एडा कोन हबो? आरो हबो 4. सबड्यूड बाय अकबर्स फोर्सेस. देन सी कोन कहि छी? अफगान चीफ्स इन पंजाब. आंसर विल बी 1. Defeated by Mughal forces. And D. Factionalism at court. Our answer कौन हबो? Led to Bairam Khan's isolation and removal. ठीक अछि. तो करेक्ट आंसर आरो कौन हबो? करेक्ट आंसर विल बी एपटे देइछि. हां एठी
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोन हबो ए रो 3 बी रो 4 सी रो 1 एंड डी 2 नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द रीजेंट एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स अर्ली इयर्स के थिले आंसर मी आंसर हम सी बैराम खान जेतबले 1556 रे हुमायून डायड अकबर को सेतबले केते एज हेतला अकबर को सेतबले 13 इयर्स एज हेतला तो बैराम खान ही एक्टेड एज रेजेंट एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तो मैनेज कोन करथिले से ही वाज मैनेजिंग द एम्पायर ठीक अछि आ आर्मीज भी मैनेज करथिले से माने केमती लीड करिवे आउ से पॉलिटिकल डिसीजंस नउतले जेतबले अकबर कर करेक्ट एज न आसी से बहुत छोट थिले 13 इयर्स र थिले तो से पर बैराम खान मैनेज करथिले क्लियर फिफ्थ क्वेश्चन with reference to the conquest of Malwa consider the following statements statement number 1 कोन कहिछि Adham Khan's initial expedition resulted in the defeat of Baz Bahadur second statement Baz Bahadur was able to temporarily reclaim his kingdom due to local resistance third statement after final defeat Baz Bahadur was executed on Akbar's orders correct statement कोन आ गोटे ऑप्शन एठी अछि 1 2 and 3 हां ऑप्शन 1 2 and 3 आंसर करंतु समस्त कमेंट सेक्शन रे ओके एबे हमें एक्सप्लेनेशन देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहै छै अधम खान्स इनिशियल एक्सपेडिशन डिफीटेड बस बहादुर एडा करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट बस बहादुर वाज एबल टू टेम्पररीली रिक्लेम हिज किंगडम ड्यू टू लोकल रेजिस्टेंस एटा भी करेक्ट अछि थर्ड स्टेटमेंट कहै छै बस बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड ऑन अकबर्स ऑर्डर्स एटा इनकरेक्ट अछि स्टेटमेंट काहे कि ना से सरेंडर करथिले एंड ही वाज मेड अ मुगल ऑफिसर फर्स्ट हमें देखिबा एक्सप्लेनेशन देखिबा फर्स्ट अटैक 1561 जो फर्स्ट अटैक हेतला अकबर सेंट अधम खान जो अधम खान थिले अकबर तांको पठेई थिले एंड पीर मोहम्मद ठीक अछि आउ एथिरे कोन हेतिले बस बहादुर को डिफीट हेतिला तो एटा करेक्ट अछि लोकल रेजिस्टेंस बस बहादुर रीगेन्ड कंट्रोल ब्रीफली विथ द हेल्प ऑफ नेबरिंग रूलर्स टेम्पररीली से जीतिथिले नेबरिंग रूलर्स को सहायता रे एटा करेक्ट अछि थर्ड तो भूल अछि मु कहली तार रीजन देन आर आंसर कोन हबो 1 and 2 सिक्स्थ क्वेश्चन देखंतु लिस्ट वाला क्वेश्चन अछि फैक्चुअल क्वेश्चन जो माने नोट्स रिवाइज करथिबे से माने इजीली आंसर करि परिबे फर्स्ट लिस्ट रे कोन अछि रीजन और किंगडम मेंशन हेछि और सेकंड लिस्ट रे कोन मेंशन हेछि की फिगर और से रीजन बा किंगडम रा के रूलर थिले तांको नाम मेंशन हेछि match the following and give the answer accordingly giving you 5 seconds ओके देखिबा फर्स्ट लिस्ट रे मालवा किए थिले बस बहादुर एथे किछि भी बुझिबार नाही बार बार रिवीजन कले एगुडा मुंडरे रहिबो मने पड़िबो एग्जाम रे मालवा बस बहादुर सेकंड गढ़ कटंग रे रानी दुर्गावती देन काबुल मिर्जा हकीम जे अकबर को हाफ ब्रदर थिले मिर्जा हकीम इलाहाबाद रे किए थिले
असफ खान जे मुगल का नोबल थिले इन दैट रीजन, मुगल नोबल इन दैट रीजन इन इलाहाबाद। ये कौन थिले? मिर्जा हकीम अकबर को हाफ ब्रदर थिले। रानी दुर्गावती को विषय टिके ब्रीफली देखिदबा गोटे सेंटेंस रे। ये गोटे बहुत ही ब्रेव बोर्न क्वीन थिले, क्वीन जे शी डाइड फाइटिंग मुगल्स। ठीक अछि। मालवारी के थिले बस बहादुर जे कि मुगल्स का द्वारा डिफीटेड हेथिले। सेवेंथ क्वेश्चन कोन हबो? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन अछि। क्वेश्चन पढ़ी के आंसर करबो। स्टेटमेंट कोन कहिछि? असर्शन कहिछि पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग राजपूत रूलर्स hereditary domains as watan jagirs helped ensure their loyalty to the Mughal empire. Reason रे कोन अछि? Watan jagirs were non transferable and economically secured the Rajput chiefs. कोन हबा आंसर? करेक्ट आंसर हबो ए। both assertion and reason are correct, explanation हमें देखिबा are correct and R is the correct explanation of A. केमिति? फर्स्ट वतन जागिर्स को ऊपर क्वेश्चन अछि। वतन जागिर्स के थिले? से माने हेरिडिटरी वतन जागिर्स होची हेरिडिटरी टेरिटोरीज ताको कुआ दउला। हेरिडिटरी टेरिटोरीज जोड़ा कि राजपूत चीफ्स मानन को दिया जाइतिला इन देयर ओन होमलैंड। वतन माने एठी वतन मींस होम। आउ एगुडा ए जो हेरिडिटरी टेरिटोरीज थिला एगुडा नॉन ट्रांसफरेबल थिला। ठीक अछि, मीनिंग द मुगल वुड नॉट मूव देम एल्सवेयर। आउ कोठी के मुगल्स माने ताको नै परिबेनी। आ माने होची राजपूत रूलर से माने कोन करथिले तांकर एंसेस्ट्रल लैंड ऊपरे तांकर से सब बळे कंट्रोल रखुथिले। दे ऑलवेज kept big security of them because the Mughals respected their hereditary rights. तांकर जो hereditary rights थिला Mughals respected that and Rajputs ता फलरे कोन हला Rajputs they remained loyal and often served in the Mughal army. ठीक अछि, तो एटा गोटे पार्ट थिला अकबर कर राजपूत पॉलिसी रो। अकबर्स राजपूत पॉलिसी, अकबर कर राजपूत पॉलिसी रो एटा गोटे पार्ट थिला टू विन द लॉयल्टी थ्रू रिस्पेक्ट एंड नॉट थ्रू द फोर्स। Both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. 8 नंबर क्वेश्चन रीड करके आंसर करो। 8 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकबर्स रिलेशनशिप विथ राजपूत। राजपूत का संगे अकबर का रिलेशनशिप पचारछि, स्टेटमेंट देछि ता ऊपर। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहिछि? राजपूत जे की एक्सेप्ट करथिले मुगल सुजरेनिटी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंपीरियल सर्विस। Second, Akbar used matrimonial alliance to build long-term relation with Rajput houses. Third statement कौन कहिछि? Some Rajput chiefs held high military and administrative position under Akbar. आउ आ भितर को स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि पचारछि। दीपांजलि सिन्हा आंसर दोचनी ए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। Correct answer will be A. Both assertion reason were correct and the reason was the correct explanation of that assertion. 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ी के आंसर दियंतु। I'll wait for a few seconds. ओके एबे हम तार एक्सप्लेनेशन देखि देबा। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहिछि? राजपूत हु एक्सेप्टेड मुगल सुजरेनिटी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम
इंपेरियल सर्विस नहीं एटा भूल अछि से माने लॉयल थिले ऊपर मु एबे एक्सप्लेन कली दे वर नॉट एक्सक्लूडेड दे आर इंक्लूडेड ठीक अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो तीनटा जाका ऑप्शन हमर कैंसिल हे गला ऑप्शन विल बी 2 and 3 ओनली बट हमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट भी देखिबा कोन पई सेटा भूल अकबर यूज्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू बिल्ड लॉन्ग टर्म relations with Rajput houses sorry 2 and 3 ठीक अछि 1 incorrect अछि 2 and 3 कोन पे करेक्ट हमें देखिबा सेकंड स्टेटमेंट जहा कहि छी तो एटा करेक्ट अछि अकबर मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस ठीक अछि ताको प्रिंसेस माननकु से मैरिज करतिले फॉर एग्जांपल जेमति कि किछटा एग्जांपल देखिबा हरखाबाई ऑफ अंबर आउ एटा से कोन पई करतिले टू क्रिएट स्ट्रांग पॉलिटिकल टाइज स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट अछि राजपूत नोबल्स लाइक जेमति थिले राजमान सिंह हेले बा राजा भगवान दास हेले फॉर एग्जांपल एटी मु एग्जांपल्स दोची से माने कोन करतिले दे हेल्ड mansabs कोन हाई मिलिटरी रैंक्स ठीक अछि तो एटा करेक्ट अछि सम राजपूत चीफ्स हेल्ड हाई मिलिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस अंडर अकबर सो 2 and 3 is correct question number 9 read question number 9 and answer in the comment section list 1 list 2 देछि again factual question अछि जल्दी जल्दी आंसर करंतु फैक्चुअल क्वेश्चन ऊपर हमें बेसी टाइम दबानी बिकॉज एटा आपण मानको रिवीजन ऊपर बेसी सेटा फोकस करूची जते भल से रिवाइज करिवे निजरो नोट्स को व जोठु पढुचंदी लिस्ट 1 रे कहिछि रोल एंड पोजीशन लिस्ट 2 रे देछि पर्सनालिटी फर्स्ट ट्रस्टेड कमांडर के थिले राजा मानसिंह कोर्ट एडवाइजर राजा बीरबल देन रीजेंट कर करेक्ट आंसर कोन हबो बैराम खान जोटा कि सेपटे अछि गोटे सेकंड मु देखौ जेटी पीडीएफ रे एठी बैराम खान हबो आंसर आ मुगल मनसबदार का आंसर कोन हबो बस बहादुर ठीक अछि आंसर कोन होइछि ए रो 3 B1 C4 and D2 question number 10 which Mughal officer was responsible for attacking Gad Katanga during Akbar's reign को मुगल ऑफिसर responsible थिले attacking this particular Gad Katanga during आंकर reign under रे की अटैक करथिले आंसर हबो असफ खान एक्सप्लेनेशन टिके देखिबा गढ़ कटांगा याकू रूल के करथले इट वाज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती जे कि गोटे गोंड क्वीन थिले ऊपर मु डिस्कस कली अकबर आंकू सेंड करथिले असफ खान को टू अटैक इन 1564 क्लियर तो रानी दुर्गावती से बहुत ब्रेवली फाइट करथिले but died in that battle after which the region was annexed असफ खान हबो एगुडा कोन पई इनकरेक्ट हबो अब्दुल्ला खान से गढ़ कटांगा he was not linked to this गढ़ कटांगा राजा मान सिंह he was Rajput general not part of this campaign and अधम खान he was involved in Malwa conquest मने रखिबे Malwa conquest not गढ़ कटांगा question number 11 को जिबा with reference to the downfall of Bairam Khan consider the following statements Bairam Khan को downfall ऊपर question अछि statements देछि first statement कहिछि Bairam Khan promoted junior officers alienating senior nobles second statement कहिछि the Turani and
Chagatai nobility supported his centralizing efforts. Factionalism at court contributed to his isolation and eventual removal. वो statement आ भितर correct अच्छे. देखिए कोई. Giving you 10 seconds to answer. ठीक है, explanation देखी दवा. First statement is correct. Bairam Khan promoted junior officers and alienated the senior nobles. Second statement actually incorrect. जो तुरानी and the Chagatai nobility थिले सेमाने कौन करथिले जो कहिछि एटी स्टेटमेंट रे they supported the centralizing efforts. It was incorrect. Third कौन कहिछि factionalism at court contributed to his isolation and eventual removal. कोर्ट रे जो फैक्शनलिज्म चली थिला सी तार आइसोलेशन और रिमूवल रो कारण हला फ्यूचर रे. तो एटा करेक्ट अछि. दिस इज करेक्ट. सो 1 and 3 ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लेन प्रमोशन पॉलिसी गोटे थिला जोटा कोहा जाउतला प्रमोशन पॉलिसी. तो ए प्रमोशन पॉलिसी रे कोन होतला एटी मोर इंपोर्टेंस दिया जाउतला जे लॉयल जूनियर्स थिले. जो जूनियर्स माने लॉयल थिले ताको बेसी इंपोर्टेंस दिया जाउतला जो फल रे कोन हेले सीनियर नोबल्स माने एंग्री हेले से माने रागिले. तो तुरानी और छागताई नोबल्स से कोन करथिले से माने गोटे पावरफुल ग्रुप थिले जे की साइडलाइन फील कले एंड दे डिड नॉट सपोर्ट हिम. ठीक अछि. तो एठी कहिचे से सपोर्ट करथिले सेइत पई ए स्टेटमेंट ता इनकरेक्ट हि गला. स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फैक्शनलिज्म ऊपर कोन कहिछि जे राइवल ग्रुप्स थिले कोर्ट रे से माने कोन हेले ना अकबर को अगेंस्ट रे पळेले जोडा की देन ही वाज डिसमिस्ड इन 1560. आंसर विल बी 1 and 3. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 12th क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन अछि केयरफुली पढी के आंसर करो. Assertion कौन कहिछि Mughal conquest of Malwa was only successful after second expedition led by Abdullah Khan. Reason: the initial conquest by Adham Khan was reversed due to local backlash against his cruelty. कौन हबो करेक्ट आंसर? Assertion is correct. ठीक अछि. और reason भी correct अछि. Answer of both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. एबे तारा में explanation लिखबा. First attempt नि आइतला 1561 रे जेतबेले कोन आइतला अधम खान was defeated Baz Bahadur. Adham Khan defeated who? Baz Bahadur but behaved cruelly with locals. तो rebellion start हे गला. रिजल्ट कोन हैला जे बस बहादुर थिले से लोकल्स मानकर हेल्प रे से पुणी थरे मालवा को नै गले. The Mughal conquest of Malwa was only successful after a second expedition led by Abdullah Khan. Second attempt रे कोन ला अब्दुल्ला खान से तांकू पठेले जे कि बस बहादुर को से पुणी थरे डिफीट कले और फाइनली मालवा को से एनेक्स करनेले. ठीक अछि. एडा फर्स्ट अटेम्प्ट रे एया हेतिला एंड
सेकंड अटेम्प्ट रे अब्दुल्ला खान को पठे कि बस बहादुर को डिफीट करके मालवा को पुणी थरे एनेक्स कर दिया गला तो एठी जो कहि छी सेकंड एक्सपेडिशन रे एटा हेतला तो एटा अजम्पशन पूरा करेक्ट अछि रीजन कोन कहि छी the initial conquest by Adham Khan was reversed due to local backlash against his cruelty जोटा कि मैं explanation रे कहली so both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. तेरह नंबर क्वेश्चन एठी पढ़ी के आंसर करंतु एनवायरनमेंट रो क्वेश्चन आसी गला with reference to biodiversity ऊपर क्वेश्चन अछि स्टेटमेंट्स देछि the majority of described species on earth are insects. Statement number 2, all biodiversity is evenly distributed across the planet. Third, the Amazon rainforest has the highest biodiversity on earth. Which of the above statements are correct? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all of these. Easy question मो हिसाब रे एटा आई गेस समस्त को एटा आसुथिबो समस्त एठी कमेंट्स रे करेक्ट आंसर आर देई परिबे बायोडायवर्सिटी रिलेटेड एची किछि फैक्ट्स ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें देखिबा कहिछि मेजॉरिटी जो डिस्क्राइब हेचंदी स्पीसीज माने अर्थ रे जो माने अछंदी सेमानक भितर मेजॉरिटी होचंदी इंसेक्ट्स जोटा कि पूरा करेक्ट ऑल बायोडायवर्सिटी इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्लैनेट एटा इनकरेक्ट लॉजिकली बा कॉमन सेंस हिसाब रे भी देखिया को गले बायोडायवर्सिटी प्लैनेट रे जदी कहिछि इवनली सेटा डिस्ट्रीब्यूटेड तो एटा केमिति कि पॉसिबल एटा तो इम्पॉसिबल इवनली सेटा तो केबे भी डिस्ट्रीब्यूट हे परिवनी जे कोनोसी हैबिटेट हो बायोडायवर्सिटी हो तो एटा रॉन्ग अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैज द हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ इट इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट कोन पई काई ना अबाउट 70% जेति कि नोन स्पीसीज हमर अछंती से माने होचंदी इंसेक्ट्स ठीक अछि आ आंको भितर जो बीटल्स रहिले बीटल्स अलोन फॉर्म अ ह्यूज नंबर statement 2 the incorrect kind of biodiversity is not evenly spread it is richest so rich code tropical regions it is richest in the tropical region and poor in the polar region statement 3 be correct achi amazon rainforest most biodiverse place on earth with millions of species of animals plants and insects so statement 3 is clearly correct answer will be 1 and 3 14th number question assertion biodiversity boosts ecosystem productivity biodiversity ecosystem productivity को boost करे reason कौन देछि greater species diversity allows each species to play a vital role in ecosystem function answer कौन हबो answer will be A both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A explanation कौन हबो more species माने कौन more the species more variety of roles जेते स्पीसीज हेबे से माने अलग अलग रोल्स सेमती कैरी आउट करबे जेमती कि फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन हे गला न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हे गला बा पेस्ट कंट्रोल हे गला तो एटा कोन लीड करूची इट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी इट बूस्ट्स इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी लीड्स टू इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी काहे ना से माने अलग अलग रोल्स कैरी आउट करबे फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एटसेट्रा गुड यदि हम एग्जांपल हिसाब रे एठी हम देखिबा फॉर एग्जांपल धर गोटे डाइवर्स फॉरेस्ट अछि ठीक अछि किछि प्लांट्स
से माने कोन करचंदी इजीली सनलाइट को कैप्चर करचंदी आउ बाकी माने कोन करचंदी ताकर शेड रे ग्रो करचंदी किछि नाइट्रोजन फिक्स करचंदी सनलाइट ओके किछि सनलाइट भल से कैप्चर कर परचंदी किछि ताकर शेड रे ग्रो करचंदी आउ किछि नाइट्रोजन फिक्सेशन करचंदी all together make the ecosystem more productive. The correct answer कौन होगा? Both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. 15 number question. Match the following. दीटा list देइची. List 1 रे include अछि region और characteristic. List 2 रे biodiversity रो features. कौन होगा correct answer? करेक्ट आंसर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आउ एठी कोन देछि बायोडायवर्सिटी फीचर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को टाइप रो बायोडायवर्सिटी फीचर देखा जाए इट होल्ड्स अप टू 90% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज काना ट्रॉपिक्स रे ग्रेटर स्पीसीज डायवर्सिटी थाए ग्रेटर स्पीसीज नंबर भी थाए बी हिमालयस एटार कोन हबो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी एट फुटहिल्स काना हम जानते जेमति जेमति अल्टीट्यूड बढ़िबो सेमति बायोडायवर्सिटी कमिबो ब्राजील रे कोन हबो हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी इंडेक्स अमंग कंट्रीज टेम्परेट रीजन रो कोन हबो टेम्परेट रीजन रो हबो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस रिड्यूस डायवर्सिटी काना अनस्टेबल हे गला रीजन ता जोडी फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होची तो सेथरे कोन होची डायवर्सिटी कम होची इंडिविजुअली एक्सप्लेनेशन देखबा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इट इज एक्सट्रीमली रिच इन बायोडायवर्सिटी it is extremely rich in biodiversity specifically the tropics part hosting 90% of all species himalayas re kon hochi more diversity in foothills than at the snow covered peaks जोटा कि highest altitude रे situated brazil रे kon amazon rainforest अछि Amazon rainforest जोटा कि ब्राजील को कोन करजे हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी इंडेक्स प्रोवाइड करजे टेम्परेट रीजन कोन इट हैड रिपीटेड आइस एजेस जो कहउचंदी ग्लेशिएशंस तो एथरे कोन रिड्यूस होची स्पीसीज डायवर्सिटी रिड्यूस होची आंसर कोन हबो आंसर हबो A3 B4 C1 and D2 16th number question assertion reason question assertion कहिछि India has higher ecological diversity than Norway reason India has deserts rainforest mangrove coral reefs wetlands estuaries and alpine meadows 10 seconds अछि 10 seconds भितर आंसर देबे जो माने दउचंदी आंसर क्वेश्चन देखिबा इंडिया वर्सेस नॉर्वे फर्स्ट कहिछि इकोलॉजिकल डायवर्सिटी ऊपर इंडिया रो समस्त जानिथिबे कि इंडिया रो वेरिड क्लाइमेट और ज्योग्राफी तो सबु आउ बहुत टाइप रो इकोसिस्टम अछि नॉर्वे कोन नॉर्वे इट हैज मेनली कोल्ड टेम्परेट
and polar ecosystem. तो रीजन टा डायरेक्टली एक्सप्लेन करछि assertion को केमिति फर्स्ट कहिछि इंडिया हैज हायर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन नॉर्वे एबे हमें देखिले कोन पई रीजन कहिछि इंडिया हैज डेजर्ट्स रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स कोरल रीफ्स वेटलैंड्स एस्चुरीज एंड अल्पाइन मियाडोस इंडिया रे ए सब जिंस अछि डेजर्ट्स अछि रेन फॉरेस्ट अछि मैंग्रोव कोरल रीफ वेटलैंड एस्चुरी अल्पाइन मियाडोस भी अछि आंसर अब ए क्वेश्चन नंबर 17 one liner question achi which region in India is known to have the greatest diversity of amphibians कोठी ईस्टर्न घाट रे कि वेस्टर्न घाट बा थर डेजर्ट बा इंडो गैंगेटिक प्लेन सुनीता राव ठीक आंसर देइचंदी 16 रो ए हबो दीपांजलि सेना यस ऑप्शन इज ए assertion reason both are correct and R is the correct explanation of A. सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन देखिबा 17 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर अब वेस्टर्न घाट्स ठीक अछि कोन पई वेस्टर्न घाट्स को कोन कहवा जाय गोटे बायोडायवर्सिटी इट इज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ठीक अछि जोटी की हेवी रेनफॉल होची डेंस फॉरेस्ट अछि परफेक्ट हैबिटेट फॉर एम्फिबियंस तो करेक्ट आंसर विल बी वेस्टर्न घाट्स अब बहुत सारे एमिति स्पीसीज भी अछंती वेस्टर्न घाट्स रे जो मान को कहवा जाय एंडेमिक माने कोन जदि से माने गोटे पर्टिकुलर हैबिटेट रे बा गोटे पर्टिकुलर रीजन रे देखा जाउछन ना जेमति कि वेस्टर्न घाट्स हेगला तो से माने वेस्टर्न घाट्स रे ही देखा जिवे से माने दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स ठीक अछि जदि गोटे स्पीसीज गोटे पर्टिकुलर रीजन रे ही देखा जाउछे से रीजन छडा आउ कोठी देखा जाउनी ताको कहवा जाय एंडेमिक स्पीसीज ईस्टर्न घाट्स रे कोन होची ईस्टर्न घाट्स इट हैज लेस बायोडायवर्सिटी थर्ड डेजर्ट रे भी सेटा बहुत ड्राई इंडो गैंगेटिक प्लेन जोटा हैला सेटा सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चरल तो एठी लेस एम्फिबियन वेराइटीज अछंती बट दे आर लेस इन नंबर देन वेस्टर्न घाट्स क्वेश्चन नंबर 18 consider the following about biodiversity measurement ऊपर क्वेश्चन अछि फर्स्ट स्टेटमेंट अछि गामा डायवर्सिटी बेटा डायवर्सिटी और अल्फा डायवर्सिटी ऊपर स्टेटमेंट्स अछि ताको पढी की एटी करेक्ट आंसर कहिबा पई कहिछि व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट एपर्यंत जो 16टा 17टा क्वेश्चंस मु डिस्कस कली समस्त को कांसेप्ट फैक्ट सब क्लियर अछि इफ क्लियर टाइप यस ओके 18th क्वेश्चन रे कहिछि फर्स्ट कहिछि गामा डायवर्सिटी एटा कोन मेजर करे डायवर्सिटी विद इन एन इकोसिस्टम नो इट इज रॉन्ग विद इन एन इकोसिस्टम एटा होछि अल्फा डायवर्सिटी अल्फा सेकंड कहिछि बीटा डायवर्सिटी एक्सप्रेसेस डायवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम जोडा की करेक्ट अछि थर्ड कहिछि अल्फा डायवर्सिटी रेफर्स टू रिचनेस एंड इवननेस विद इन एन इकोसिस्टम एटी मु कहली तो 2 and 3 आर करेक्ट गामा डायवर्सिटी रॉन्ग अछि अल्फा डायवर्सिटी जदि हमें टिके देखिबा अल्फा डायवर्सिटी होची जो भी वेराइटीज अछि से माने गोटे सिंगल इकोसिस्टम रे ताको मेजर करा जाउची स्पीसीज रिचनेस बा इवननेस दी टाइप ऑफ स्पीसीज रिचनेस प्लस इवननेस गोटे सिंगल इकोसिस्टम रे मेजर करा जाउची ताको को आउची अल्फा डायवर्सिटी इट रेफर्स टू द रिचनेस एंड इवननेस विद इन एन इकोसिस्टम बीटा डायवर्सिटी कोन एटा होची चेंज इन स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम्स फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हे गला फॉरेस्ट वर्सेस ग्रासलैंड थर्ड होची गामा डायवर्सिटी कोन एटा होची गोटे ओवरऑल डायवर्सिटी फॉर अ लार्ज एरिया ठीक अछि जोटी की बहुत सारा इकोसिस्टम्स कंबाइनली इंक्लूडेड अछि ताको कहवा जाउची गामा डायवर्सिटी आंसर कोन बा 2 and 3 ऑप्शन नंबर बी 19th क्वेश्चन अछि 19th क्वेश्चन assertion reason question
assertion कहिछि greater biodiversity increases ecosystem resistance to invasive species. Reason कहिछि more complex ecosystem are more complex ecosystems are more resilient to disturbances. जेते complex ecosystem हबो सेमाने सेते disturbances को resilient हेइ परिबे बा रोकी परिबे, सेमाने एते भी affect हेबेनी जेतेबेले disturbances हबो. आउ assertion कहिछि greater biodiversity जेतेबेले biodiversity increase हबो, greater the biodiversity it increases the ecosystem resistance. ecosystem resistance भी biodiversity रो growth संगरे increase हुए. कहा प्रति invasive species से माने इत्ते affect है बनी invasive species. आर आंसर करंतु समझते. आंसर आर कौन हबो? आंसर एक्चुअली हबो both assertion and reason are correct and R is a correct explanation of A. केमिति जेतबे डाइवर्स इकोसिस्टम अछि, मोस्ट इकोलॉजिकल माने जो रोल्स रही छी डाइवर्स इकोसिस्टम रे, इकोलॉजिकल रोल्स दे आर ऑलरेडी फिल्ड. ठीक अछि. तो इन्वेसिव स्पीसीज जो अछंती, इन्वेसिव स्पीसीज दे फाइंड इट हार्डर टू स्प्रेड. तो जिते कॉम्प्लेक्स हबो बायोडाइवर्सिटी टा सेते चेक्स एंड बैलेंसेस बढ़िबो बायोडाइवर्सिटी भितरे. मोर चेक्स एंड बैलेंसेस, a more checks and balances, more the stability. Example देखिबा. For example, गोटे डाइवर्स कोरल रीफ, डाइवर्स कोरल रीफ से कौन रेजिस्ट करछि? इट रेजिस्ट्स इन्वेसिव एल्गी बेटर देन अ रीफ जोठी की ओनली फ्यू स्पीसीज. ठीक अछि. आंसर अब ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 20th नंबर क्वेश्चन. लिस्ट 1 रे देछि बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, लिस्ट 2 रे देछि एग्जांपल. मैच करिकी आंसर को करेक्ट आंसर सिलेक्ट करबा को पाइछि. इति कोड्स देछि, फर्स्ट मैच करो देन कोड्स मिलेबा. ओके. तो हैबिटेट लॉस रो एग्जांपल कोन आ भितरु अमेज़न फॉरेस्ट कट फॉर सोया और कैटल. एटी डिफोरेस्टेशन होछि त एटा गोटे हैबिटेट लॉस रो एग्जांपल. ओवर एक्सप्लॉइटेशन रो एग्जांपल कोन? मैंग्रोव क्लियरिंग फॉर प्रॉन फार्मिंग. एटा होछि ओवर एक्सप्लॉइटेशन रो एग्जांपल. इन्वेसिव स्पीसीज रो एग्जांपल कोन? एग्जांपल से लांटाना, वाटर हाइसिंथ इन इंडिया. को एक्सटिंक्शन रो एग्जांपल इज 2. लॉस ऑफ host fish causes parasite loss. एथरे सेमति किछि कांसेप्ट नै, डायरेक्ट हमें कोड्स देखिबा, कोड्स मैच करिबा. करेक्ट आंसर कोन हबो? करेक्ट आंसर विल बी A रो 3, B1, C4 and D2. क्वेश्चन नंबर 21. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. स्टेटमेंट्स देछि रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग कंजर्वेशन. First statement कहिछि identification of hotspot requires at least 1500 endemic vascular plants. Okay. Statement number 2, sacred groves are included in situ conservation efforts. Statement 3 कहिछि ex situ conservation involves protecting species within their natural habitat. पचारछि correct option आ भितरु कोन? करेक्ट आंसर दियंतु कमेंट सेक्शन रे. गिव द करेक्ट आंसर.
स्टेटमेंट्स गुडा एनालाइज करबा फर्स्ट गोटे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रो गोटे क्राइटेरिया देछि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रो क्राइटेरिया जो मानकर मन अछि से माने कमेंट्स रे यस टाइप करबो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को गुडा को कुहा जिवो तार किछटा फिक्स्ड क्राइटेरिया अछि आउ ए क्राइटेरिया पर्टिकुलरली वन ऑफ इट की नुहे देखिबा मिनिमम 1500 टा स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स थिबा दरकार प्लस 70% हैबिटेट लॉस एटा होची बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रो क्राइटेरिया दिस इज करेक्ट टू कहिछि सेक्रेड ग्रोव्स आर इंक्लूडेड इन सिटू कंजर्वेशन सेक्रेड ग्रोव्स कोन जो ग्रोव्स गुडा दे आर प्रोटेक्टेड naturally by communities they are protected naturally by communities तो एटा कहार पार्ट एटा इन सिटू कंजर्वेशन रो गोटे पार्ट स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट हे गला स्टेटमेंट नंबर 3 is incorrect then ex situ conservation involves protecting species within no it is not within होजी in situ they are natural habitat तो statement number 3 is incorrect answer कोन हो 1 and 2 ex situ रो किछि एग्जांपल सेठी नोट करनियो फॉर एग्जांपल zoos botanical gardens question number 22 एडी assertion पढो assertion कोन कहि छै the world has witnessed 68% decline in population of mammals birds fish reptiles and amphibians since 1970 पर ठारू वर्ल्ड एपर्यंत 68% डिक्लाइन देखि सारलानी को मानक पॉपुलेशन मध्य रे मैमल्स बर्ड्स फिश रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस रीजन कोन रीजन होची हैबिटेट लॉस ओवर एक्सप्लॉइटेशन इन्वेसिव स्पीसीज एंड क्लाइमेट चेंज आर थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी कोन बार करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर अब ए बोथ assertion and reason are correct assertion और reason रू जणा पड़ी जाउची कि जदी पॉपुलेशन मानकर एते डिक्लाइन करि सरची तो ऑब्वियसली हैबिटेट लॉस ओवर एक्सप्लॉइटेशन इन्वेसिव ए माने होचंदी रीजन ठीक अछि डिक्लाइन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज anthropogenic activities can also be a reason habitat loss is also a result of anthropogenic activities habitat loss egala over exploitation egala eguda result of anthropogenic activities decline due to human activities jemti ki destroying habitats egala over hunting over fishing koruchandi introducing harmful species and climate change egala they all are threats to biodiversity तो से reason टा it directly explaining the assertion जहा फल रे एते decline एबे देखा जाय so both a and r are correct and r is a correct explanation of a 23rd question as per the note which of the following best describes biomimicry kon what is the term biomimicry biomimicry kon biomimicry hoji biomimicry equals to using nature's designs or जहाँ भी नेचर स्ट्रैटेजी रही इन ह्यूमन इनोवेशन ताकू कुआ जाउची बायोमिमिक्री मिमिक करची काहाकू बायोडायवर्सिटी को एग्जांपल एटी हमें गोटे एग्जांपल देखिबा
जेमति कि बुलेट ट्रेन हे गला बुलेट ट्रेन इन जापान से माने को हिसाब रे शेप हेचन दे आर शेप्ड इन किंगफिशर्स बीक शेप्ड एज किंगफिशर्स बीक कोथ पे सेटा को एमती शेप दिया जायछि फॉर लेस नॉइज एंड मोर स्पीड तो एटा गोटे बायोमिमिक्री रो गोटे एग्जांपल आउरी भी अदर ऑप्शंस अछि दैट आर अनरिलेटेड टू दिस बायोमिमिक्री ए जो स्टेटमेंट्स देछि कि जेमति कि तो आंसर आरो कोन हबो फर्स्ट हमारा आंसर देखबा आंसर इज बी एमुलेटिंग नेचुरल सिस्टम टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स cultivating a single crop no this is incorrect transferring species from one habitat to another na collecting specimens for museum stock this is option number B 24th question match the following list 1 रे अछि conservation type and list 2 रे mention हेछि examples in situ कोन ex situ protected area hotspot जो conservation types रहिले तांकर एग्जांपल्स किछिटा प्रोवाइड हेछि राइट साइड रे लिस्ट 2 रे मैच करबा अगरो टिके टर्म्स गुडा देखि देबा इन सिटू माने कोन इन सिटू होछि जोटा कि प्रोटेक्शन इनसाइड देयर इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट ठीक अछि एक्स सिटू माने कोन एक्स सिटू होछि प्रोटेक्शन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट ठीक अछि एक्स सिटू रे एग्जांपल कोन इन सिटू रे एग्जांपल एट देखिबा नेशनल पार्क हे गला बा बायोस्फीयर रिजर्व से गला एक्स सिटू रे एग्जांपल कोन जूस हे गला बोटानिकल गार्डन से गला जोडा होची प्रोटेक्शन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्टेड एरिया होची जोटी की प्रोवाइड करा जाए लीगल प्रोटेक्शन and they can include national park wildlife sanctuaries sacred groves and biodiversity hotspot kono hotspot ro criteria 1500 endemic vascular plants thibe plus 70% habitat loss 25 number question. With reference to the establishment of British rule in India, consider the following statements. First statement koichi Royal Foreman allowed East India Company to trade in India without paying custom duties. Second statement koichi Mughal Empire, the decline of Mughal Empire directly led to the emergence of Marathas and as the sole power in India. Third statement koichi East India Company initially set up factories at Surat, Masulipatam and Madras. वो गुड़ा करेक्ट अछि 10 seconds रे आंसर जो मन बोल फर्स्ट स्टेटमेंट देखिया फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहै छी रॉयल फॉर्मन जोडा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ करथिला ट्रेड करिया पई विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज सेटा केबे ताकू ग्रांट हेतला सेतबेले जे मुगल एम्परर थिले के थिले सेतबेले फरूक सियार से ग्रांट करथिले केबे 1717 रे तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अछि सेकंड स्टेटमेंट कोन कहै छी
कि मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करे मराठा सोल पावर हिसाब रे इमर्ज करी गले इंडिया रे दिस इज रॉन्ग काहे ना आहुरी भी रीजनल पावर्स थिले जेमति कि लाइक निजाम मैसूर सिख etc they also rose not only marathas statement number 3 east india company initially से माने कोडी कोडी फैक्ट्री सेट करते सूरत मसूलीपट्टनम एंड मद्रास ठीक अछि सूरत रे फर्स्ट सेट करथिले केबे 1613 रे तापर मसूलीपट्टनम रे मद्रास इन 1639 आंसर कोन बा आंसर विल बी 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी 26 number question assertion reason type question अछि assertion कोन East India Company became the de facto ruler of Bengal after the Battle of Plassey. Battle of Plassey पर East India Company Bengal ର de facto ruler ହେଇगला. Then reason कोन company installed Mir Jafar as the Nawab of Bengal, allowing them to control administration indirectly. कोन हबार आंसर फर्स्ट assertion कोन कहिछि बैटल ऑफ प्लासी परे ईस्ट इंडिया कंपनी डी फैक्टो रूलर हेगला कोठी करो बेंगल रो दिस इज करेक्ट काहेकि ना रियल पावर से तबले कंपनी को शिफ्ट हेगला आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी रीजन कोन कहिछि दे इंस्टॉल्ड मीर जाफर एज नवाब and they control the administration indirectly this is also correct and yes this is exactly why they got the power so both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. 27. With reference to British expansion upare statements achi. First kahichi third Carnatic war ended with the French gaining political dominance in southern India. Second statement kahichi East India Company applied the lessons learned from French strategies in Bengal. Third kahichi defeat of the Marathas in the third battle of Panipat allowed them to fill the political vacuum in India. कौन हमारा आंसर एच में लिखी दोजे रेस्ट पॉलिटिकल वैक्यूम इन इंडिया को स्टेटमेंट अभी थ्रू करेक्ट हबो स्टेटमेंट नंबर 1 कोन कहिछि थर्ड कार्नाटिक वार विषय रे जोटा कि फ्रेंच पॉलिटिकल डोमिनेंस दिस इज रॉन्ग ब्रिटिश डोमिनेंस वाज एस्टैब्लिश हेतला केबे आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस हेतला 1763 तो एटा रॉन्ग हिजबो ईस्ट इंडिया कंपनी applied French strategy lessons in Bengal. This is correct. Kaina it improved military alliances and political deals. Third battle of Panipat. Kebe itla third battle of Panipat 1761. इतरे कोन इतला मराठास ताकर डिफीट हेतला मराठास को डिफीट पर गोटे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होला पर ब्रिटिश माने ताकू लेटर फिल कर देले से पॉलिटिकल वैक्यूम आंसर कोन हो 2 and 3 2 and 3 28 number question assertion
assertion कौन कहिछि Treaty of Allahabad marked a significant shift in the East India Company role in India. Reason होछि it granted the EIC the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha. assertion एठी कहिछि जो Treaty of Allahabad रहिला से गोटे significant shift देथिला ईस्ट इंडिया कंपनी कर जो रोल थिला इंडिया रे. रीजन तार होछि ईस्ट इंडिया कंपनी को सेमान को ग्रांट हे गला कोन दीवानी राइट को रीजन रो बेंगल, बिहार एंड ओडिशा. assertion करेक्ट अछि. से माने कोन हे गले ईस्ट इंडिया कंपनी दे शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स. दीवानी राइट ताको ग्रांट हैला. दीवानी राइट माने कोन रेवेन्यू कलेक्शन. रेवेन्यू कलेक्शन कोथि पई के बेंगल, बिहार आ ओडिशा पई के. आ एटा थिला आर एग्जैक्ट रीजन. आंसर कोन बा बोथ assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. 29th number question, which of the following best describes the dual government system in Bengal after the battle of Buxar? battle of Buxar pare a bithru ko statement best describe करछि जो dual government system चलिला बेंगल रे. dual government system कोन जे नवाब थिले ठीक अछि he had nominal authority. he had nominal authority. A company पाखरे कोन थिला authority to collect the revenue and से माने military भी control करूथिले. जेतेबेले कि नवाब he only handled the administration on paper. ठीक अछि आपको कहआ जाउछि dual government system. और dual government system माने कोन कंपनी पाखरे real power थिला और नवाब he was only a figurehead. The answer कोन बा answer will be B. The company collected revenue while the Nawab retained the nominal sovereignty. Question number 38 read करो. मैच कहिछि लिस्ट वन फर्स्ट लिस्ट रे कहिछि टेरिटोरीज लिस्टेड अछि एंड सेकंड लिस्ट रे ट्रीटी ऑफ इवेंट ऑफ एनेक्सेशन. ए टेरिटोरी मान करो ट्रीटी आ तांकर केबे केबे से एनेक्स हेतले से इवेंट्स लिस्टेड अछि. फर्स्ट कहिछि सिंध, देन आसाम, नागपुर, बलूचिस्तान. आंसर कोन अब अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. एतरे बुझिबार किछि नै. सिंध बैटल ऑफ मियानी 1843. आंसर कोन अब आंसर 4. आसाम केबे एनेक्स हेतला ट्रीटी ऑफ यंदाबो 1826. ठीक अछि. 3 आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर. सी नागपुर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1854 रे जो हितला. बलोचिस्तान ट्रीटी ऑफ गंदबार 1879. ड्यूरिंग व्हाट ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो अफगान वॉर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 31st question. 31st question कौन कहिछि. Consider the following about the regulating act. 1773 रो जो regulating act अछि act थिला तार किछिटा स्टेटमेंट्स देछि. First statement कहिछि it was the first step by British Parliament to supervise the company's activities. Second statement कहिछि established a governor general in India. Third statement कहिछि abolished the board of control in London. आ भितर कोटा करेक्ट अछि. Regulating Act 1773 समस्त मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी रे पढिथिबे लक्ष्मीकांत रो. क्वेश्चन एटी पढि की समस्त आंसर करो.
ओके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कोन एटा होची गोटे फर्स्ट स्टेप को मान द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट टू सुपरवाइज कंपनीज एक्टिविटीज आ ये स्टेटमेंट टा पूरा ठीक अछि कोन पय काना आ आगुरु कंपनी गोटे प्राइवेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हिसाब रे काम करतला आ अंडर दिस एक्ट इट बॉट अंडर द पार्लियामेंटरी ओवरसाइट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट 2 रे कोन कहि छि इट एस्टैब्लिश्ड अ गवर्नर जनरल इन इंडिया एटा ट्रू अछि इट क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट के थिले फर्स्ट थिले वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल इन बंगाल and made presidencies of Bombay and Madras subordinate to Bengal in political matters. Third statement कहिछि it abolished the board of control in London. No, this is incorrect. कोन पई board of control create हैला later by Pitt's India Act 1784. In 1773 it didn't exist yet, so it couldn't be abolished. Statement 3 is incorrect. Kon abo answer 1 and 2. Second. 32 number question. Assertion. British policy of divide and rule was crucial in their conquest of India. ब्रिटिश मानकर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थिला सेटा बहुत इंपोर्टेंट थिला इंडिया को कन्क्वेस्ट करिबारे रीजन कोन कहि छि रीजन होछि इंटरनल डिवीजन और राइवलरी जो चलीथिला इंडियन रूलर्स मानक भितरे सेटा इट प्रिवेंटेड द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनाइटेड फ्रंट इंडियन रूलर्स माने यूनाइटेड हेई परलेनी ब्रिटिशर्स मानक अगेंस्ट बिकॉज ड्यू टू द इंटरनल डिविजन्स एंड राइवलरीज दैट वर गोइंग अमंग द इंडियन रूलर्स ऑब्वियसली आमे पढिचे कि डिवाइड एंड रूल एटा क्रुशियल तो थिला काइना से माने जो राइवलरीज चलीथिला आकु एक्सप्लॉइट कले दे एक्सप्लॉइटेड द राइवलरीज बिटवीन द इंडियन रूलर्स प्रिंसेस कम्युनिटीज टू एक्सपैंड द पावर assertion is correct and reason जो इंटरनल डिवीजन अमंग द रूलर्स थिला से कोन कला जेतबेले सबु बेले तांको भीतर डिफरेंसेस थिला तो से माने यूनाइटेड हेई परलेनी दे लैक्ड यूनिटी फॉर एग्जांपल जेमति की मराठास वर्सेस निजाम मैसूर वर्सेस ट्रावनकोर ठीक अछि आंसर कोन हबो आंसर इज ए 33 who was the first Indian state to join the subsidiary alliance system through the Treaty of Allahabad one liner question factual अछि कोन हबार आंसर answer about Awadh. See, Awadh will be the correct answer. 1765. कौन हेतला? Treaty of Allahabad. Treaty of Allahabad रे कौन हेला? It brought Awadh under the British protection. ठीक अछि. And started the subsidiary alliance system. Subsidiary alliance system को it formally expanded by Lord. The subsidiary alliance system it was formally expanded by Lord Wellesley later. पछरे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेलेस्ली आको फॉर्मली एक्सपैंड करले ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अवध होगा 34th number question which of the following were major causes of the success of British rule in India first superior British military technology second देखो जी statement second statement होची unified opposition from
Indian rulers, British financial and organizational strength, political disunity in India. Answer कौन होगा? समस्त क्वेश्चन पढ़ सारे एबे हमें आंसर को जिबा आंसर हबो बी 1 3 एंड 4 केमती फर्स्ट कोन कहि छी सुपीरियर मिलिटरी टेक फर्स्ट स्टेटमेंट थिला सुपीरियर मिलिटरी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली कहना बेटर आर्टिलरी थिला ताको पर डिसिप्लिन इन्फैंट्री थिला यूनिफाइड ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन रूलर्स नहीं ऑपोजिशन तो यूनिफाइड नथिला उल्टी ऑपोजिशन फ्रैगमेंटेड थिला सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गला देन कहि छी ब्रिटिश फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स यस दे हैड द रिसोर्सेज फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेड resources correct above fourth political disunity in India yes rival Indian states जो थिले they often sided with the British against each other तो इंडिया रे political disunity थिला आंसर कोन हो 1 3 and 4 35 match list revolt or event list 2 feature or description Vellore Mutiny Kittur revolt Sannyasi rebellion and the Mappila uprisings Vellore Mutiny कोन हो it sparked by new dress regulation ठीक अछि केबे इतला 1806 sparked by new dress regulation जो गुडा जो मन जोटा अफेक्ट करतला को मानको सिपाही मानको तांकर यूनिफॉर्म और रिलीजियस सेंटिमेंट को अफेक्ट करतला किट्टूर रिवोल्ट लेड बाय रानी चन्नम्मा 1824 डेट गुडा मन रखिबे लेड बाय रानी चन्नम्मा अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स doctrine of lapse against Sannyasi rebellion रा आंसर हबो 2 early peasant or tribal revolt एटा late 18th century हेतिला late 18th century रे हेतिला जोटा कि गोटे early peasant tribal uprising in the Bengal हेतिला D होची Mappila uprising ये हेतिला केबे 19th century रे The peasant by religious movement थिला कोडी in Malabar against whom? Against landlord and British. Answer कौन होगा? Answer is A3, B1, C2 and D4. Question number 36. Assertion reason. Assertion कौन? The charter of 1833 marked a significant shift in the nature of British rule in India. Reason कौन? Reason it ended the commercial activities of the East India Company and legalized colonization. 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ो दीपांजलि सिन्हा पचारचंदी कोटा हबो 33 नंबर क्वेश्चन आउथरे पचारचंदी की अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन रा आंसर हबो Awadh is the answer. समस्त पढ़ सारे 36 नंबर क्वेश्चन assertion कहि charter act of 1833 से गोटे significant shift provide कला in the nature of British rule in India. This is correct. कहना it centralized governance ठीक अछि and made the governor general of Bengal governor general of India so it marked a big shift therefore assertion is correct
Reason कौन कहिछि? It ended the commercial activities of the East India Company and legalized colonization. Yes, and this directly explains why it was a major shift. Company जोटा कि एबे purely administrative है. Both assertion and reason are correct, and R is the correct explanation of A. 37 number question. Read 37 number question. Which of the following territories was annexed by the British through the doctrine of lapse during Dalhousie's tenure? Which of the following co territory annex हेतिला by British through the doctrine of lapse under रे कहाँ को tenure है? Dalhousie को tenure है. Correct answer कौन होगा? Correct answer होगा सतारा. जोटा कि 1848 रे it was the first major annexation. First major annexation. First major annexation under the policy during Lord Dalhousie's tenure. Mysore और Sindh से माने it was taken earlier by other means. Awadh 1856 रे misgovernment policy रे annex हेतिला, not doctrine of lapse, so answer will be सतारा. Question number 38. List 1 and list 2. List 1 रे कोन अछि गवर्नर बा गवर्नर जनरल ऑफिशियल्स अछंती. List 2 रे तांकर contributions. Warren Hastings, Lord Wellesley, Lord Dalhousie, Lord Cornwallis तांकर contributions mention हेछि. Answer करंतु. Match the following. पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन अछि, एतरे बुझिबार किछि नै. वॉरेन हेस्टिंग्स कोन हबो? फर्स्ट गवर्नर जनरल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऊपर मु कहिछि, ऑलरेडी मेंशनड अर्लियर. लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस, मेंशनड अर्लियर. लॉर्ड डलहाउसी कोन हबो? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन रे गला. लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस कोड. आंसर हबो A4B2 A4B2 C3D1. Question number 39 देखिए. Consider the following statement with reference to the regulation of obscene content in India. First statement कहिछि, Supreme Court has held that obscenity does not enjoy protection under the right to freedom of speech and expression. Article 19 clause 2 of the Constitution permits reasonable restrictions on free speech in the internet decency and morality. Section 67 and Section 67A of the IT Act 2000 deal with the regulation of unlawful and the obscene online content. Which of the statements given above are correct? तीनोटी statement withdrew, वो statement ही correct. Statement by statement देखिए. Obscenity regulation in India जो अछि, Supreme Court कहिछि कि obscenity protect होनी under free speech. This is correct. Correct statement. कोथि पई कि आउ एटा को केस रे अपील देतला. केस रो नाम मने रखिबे, अभिक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014. एई केस रे एटा आसीतला. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये अलाउ करछि रेस्ट्रिक्शन फॉर डिसेंसी एंड मोरालिटी. यस, दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 3. सेक्शन 67 और 67A आईटी एक्ट रो डील करूची ऑब्सिनिटी और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो कंटेंट रहिची ऑनलाइन, तो एटा भी करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन बी. 40th नंबर क्वेश्चन. assertion कहिची coral reefs cover about 1% of ocean area but support 25% of marine life. Our reason होची coral reefs survive best in clear shallow water with stable salinity and hard substrates.
कोरल रीफ्स ऊपर क्वेश्चन अछि कोन हबा करेक्ट आंसर which of the following is correct in respect of the above statements समस्त क्वेश्चन रीड कर सरले स्टेटमेंट 1 कहै छै कि कोरल रीफ ओशियन रो 1% कवरेज थाई कि भी समय 25% मरीन लाइफ constitute करछे and this is correct स्टेटमेंट 2 कहै छै कि बेस्ट इन क्लियर एवडा ए सब जिंस दरकार कोरल रीफ्स को सर्वाइव करिया पई क्लियर शैलो वाटर with stable salinity hard substrate so this is the reason both correct habo both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1 41 number question आर्ट फॉर्म कहिछि रीजन ऑफ ओरिजिन कहिछि फैक्चुअल अछि फर्स्ट कोन कहिछि पट्टचित्र सोहराई एंड पटुआ पट्टचित्र हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड पट्टचित्र को मैच करा जे झारखंड सहित झारखंड नो पट्टचित्र एक्चुअली ओडिसा रो वन तो इनकरेक्ट हे गला सोहराई कोन ओडिसा कहिछि एटा मिसमैच अछि सोहराई एक्चुअली झारखंड रो एटा इंटरचेंज कर दिया जाय पटुआ एक्चुअली वेस्ट बंगाल रो ठीक अछि तो ओनली वन इज करेक्ट ओनली वन ऑफ द अबव पेयर इज करेक्ट पटुआ ऊपर आ गोटे क्वेश्चन अछि पटुआ रिसेंटली मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्ट इज described as कोन एटा गोटे गोटे मेटल क्राफ्ट टेक्निक बा गोटे फोक पेंटिंग स्टिच्ड ऑनटू क्लॉथ स्क्रोल्स बा गोटे वुड कार्विंग ट्रेडिशन बा गोटे म्यूरल आर्ट प्रैक्टिस्ड इन टेंपल्स पटुआ आर्ट जोटा वेस्ट बंगाल रो सेटा आ भितरु कोन एग्जैक्टली आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन ठीक अछि पटुआ जोटा रहिला सेटा होछ गोटे फोक आर्ट इट इज अ फोक आर्ट फॉर्म ऑफ कहार ऑफ वेस्ट बंगाल इन्वॉल्विंग स्क्रोल पेंटिंग्स जोटा कि पट्टचित्र स्टाइल रो रहउची ऑफन स्टिच्ड और माउंटेड ऑन क्लॉथ okay so it is a folk painting stitched onto cloth rolls 43rd number question which of the following statement best describes the Indian regional navigation satellite system IRNSS known as NAVIC चारटा जाक स्टेटमेंट पढ़ो फर्स्ट होची इट इज अ ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग वर्ल्ड वाइड कवरेज एटा गोटे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम आ जहार कवरेज होची वर्ल्ड वाइड सेकंड कहिची इट इज अ मैरीटाइम कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम फॉर इंडियन ओशन कंट्रीज थर्ड कहिची इट इज अ वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेटेड जॉइंटली विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी फोर्थ कहिची एटा इंडिया रो गोटे इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जे कि प्रोवाइड करची प्रेसिजन पोजीशन डाटा in India up to 1500 kilometer beyond its borders. Navic कोन Navic एटा बहुत आगुरु न्यूज रे रही आसुची Navic समस्त जानिथिबे एटा इंडिया रो गोटे इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट मध्य रो सैटेलाइट सिस्टम जोटा कि ऑपरेशनल रेंज तार रहिची अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर्स कि कहा द्वारा डेवलप हेतला इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो कोथि पई कि फॉर एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ लैंड सी एंड एयर ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच मिनिस्ट्री इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम कोन प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम्स मु सब बेले कहिछि जेते बेले गोटे स्कीम पढुचंती ताकू को मिनिस्ट्री अंडर रे सेटा आसुची इंप्लीमेंटेशन तारो एटा बहुत इंपोर्टेंट काना एग्जाम रे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे स्पेसिफिकली कोन हुए से माने मिनिस्ट्रीज चेंज कर दियंती आ जो माने जानि नथिबे बा बार बार रिवीजन करि नथिबे तो सेठी मिनिस्ट्री रे से माने कंफ्यूज हेबे सो जेते बेले स्कीम पढुचंती तार मिनिस्ट्री मने रखंतु को मिनिस्ट्री अंडर रे एटा आसुची स्टेटमेंट्स रे अछि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
का अंडर रे आसु मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फोकस कोन ए स्कीम रो व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस स्कीम फोकस होची स्किल डेवलपमेंट लीडरशिप एंड livelihoods for को मानक भाई notified minorities for notified minorities answer about B Ministry of Minority Affairs 45 number question which of the following condition is optimal for coral reef formation को कंडीशन कोरल रीफ फॉर्मेशन पाई की जरूरी स्टेटमेंट 1 कोन कहिची वाटर टेंपरेचर थिबा दरकार बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हाई लेवल ऑफ सेडिमेंटेशन थिबा दरकार पानी रे डेप्थ थिबा दरकार लेस देन 50 मीटर्स फॉर सफिशिएंट सनलाइट पेनिट्रेशन रैपिडली फ्लक्चुएटिंग सलाइनिटी लेवल्स कौन हम कोरल्स मान को सर्वाइव करबा पई दरकार वार्म वाटर दरकार नॉट वाटर टेंपरेचर बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म वाटर जनरली 20 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड रे तांको दरकार आ क्लियर शैलो वाटर दरकार जहार डेप्थ लेस देन 50 मीटर्स थिबो फॉर सफिशिएंट सनलाइट पेनिट्रेशन ठीक अछि सफिशिएंट सनलाइट पेनिट्रेशन हेले कोन से माने फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करिवे बाय फोटोसिंथेसिस किए करे कोरल रीफ्स रे जूजैंथली आउ स्टेबल सलाइनिटी दरकार फ्लक्चुएटिंग सलाइनिटी लेवल्स को आंसर अब सी 46th number question consider the following statements regarding the CETA comprehensive economic and trade agreement CETA eliminates tariffs on 99% of Indian tariff lines and reduces tariffs on 90% of UK tariff lines CETA restricts Indian MSME from participating in UK government procurement CETA कोन comprehensive CETA रो full form होची comprehensive economic and trade agreement और CETA is between Canada and EU not UK and India Canada और European Union भितरे CETA agreement अछि UK India भितर नो और ये जो statement रही छी it is factually wrong no such tariff percentage with India and it doesn't bar the MSMEs So the answer will be none. Option number C. 47th question. Consider the following statements regarding the another scheme. ऊपर question प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास scheme. Among the 6 notified minorities कहिछि अगरो notified minorities को पाई scheme 6 notified minorities targeted by the scheme. Parsis जो रहिले Zoroastrians are not included. The scheme converges 5 erstwhile schemes and focuses on the upliftment of 6 notified minority communities. Which of the above are correct? PM विकास जो स्कीम रोची सेतरे 6 notified minorities in India जे गेले Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis जो मानको Zoroastrians भी कहउछंदी and Jains. They are included. Parsis are also included. So this is incorrect. Statement 2 कोन कहिछि the scheme converges 5 erstwhile schemes and focuses on the upliftment of the 6 notified minority communities. Scheme merges earlier programs and focuses on these 6. This is correct. Answer कोन हबो B 2 only. 48 consider the following statement about the power market coupling. Power market coupling कोन first statement कहिछि day ahead market एटा गोटे डैम. The day ahead market is a financial trading platform for buying and selling electricity for the next month.
Statement 2, market coupling aggregates orders from all power exchanges to determine a uniform market clearing price. Market coupling helps achieve price convergence between different electricity markets. Statement गुड़ा थरे पढ़ी दियो तापर मो आंसर कहूँ. Statement 1 कही जो डे अहेड मार्केट रहला सेटा गोटे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोथि पई कि बाइंग और सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट मंथ पई कि दिस इज इनकरेक्ट. एटा नेक्स्ट मंथ नो, एटा होसी नेक्स्ट डे. Next day, not next month. So statement 1 is correct. Market coupling aggregate order from all power exchanges to determine a uniform market clearing price. एटा correct अछि. जोटा कि it decides a single price. Okay, the market coupling aggregate orders from all exchanges to decide a single price. So this statement is correct. Statement 3 कौन कही? Market coupling helps achieve price convergence between different electricity market. This is correct. It promotes price convergence across exchanges. 2 and 3. 49th question. With reference to objectives of the AI for India 2.0 program, which of the following statements are correct? AI for India 2.0 program. AI for India 2.0. पर एक क्वेश्चन अच्छी. फर्स्ट स्टेटमेंट कही it aims to make tech skills accessible and inclusive for India's youth. सेकेंड स्टेटमेंट कही प्रोग्राम टा लिमिटेड टू अर्बन स्टूडेंट्स ओनली जो माने कि इंग्लिश रे प्रोफिशिएंट. स्टेटमेंट नंबर 3, इट एम्पावर्स द यूथ बाय एनेबलिंग टेक लर्निंग इन मल्टीपल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आ भितरु को स्टेटमेंट करेक्ट? Statement 1 is correct. काइना फोकस अछि तार एक्सेसिबल आउ इंक्लूसिव टेक स्किल्स यूथ मानक पई या ऊपर. स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट. एटा क्लियरली जणा पडुछि कि केबे भी जेतेबेले गोटे स्कीम लॉन्च हबो से गोटे पर्टिकुलर एरिया गोटे जे बेटर ऑफ लोक रहउछन्ती जो दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश तांको पई तो लिमिटेड हे कि रहबनी, नॉट लिमिटेड टू अर्बन और इंग्लिश स्पीकर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Statement number 3, it empowers the youth by enabling tech learning in multiple vernacular languages. So it is available in multiple Indian languages. This is correct. Option 1 and 3. Question number 50. Consider the following statements. Assertion. Arctic amplification causes the Arctic region to warm more quickly than the rest of the earth. Reason nara kona? Reduced albedo in the Arctic accelerates warming, resulting in additional ice and snow loss through a feedback loop. Which of the following is correct in respect of the above statements? Statement 1 टा correct अछि. Assertion is correct. काहे कि ना जो आर्कटिक वार्मिंग होची, आर्कटिक वार्मिंग फास्टर देन ग्लोबल एवरेज कोथि में होची ड्यू टू फीडबैक लूप. जोटा के रीजन रे मेंशन हेची. रीजन रे कोन मेंशन हेची? जेतेबेले रिड्यूस हे होची अल्बेडो, अल्बेडो रिड्यूस हेले कोन हबो? लेस अल्बेडो लेस रिफ्लेक्शन, तो more absorption. And it leads to Arctic amplification. So both are correct and
R is the correct explanation of A statement दुईटी जाक correct अछि ठीक अछि both are correct two explains one option number A is correct okay so that is it for today 50 टा MCQs आमे आज सॉल्व कले तार एक्सप्लेनेशन देखिले जो गुडा आपनकर भूल हेतिबो बा जो माने अटेम्प्ट भी करि नथिबे एग्जाम से माने एठू जहां भी मु बतैली से माने निज नोट्स रे नोट डाउन करि परिबे आ जो माने मॉक टेस्ट दउचंती से मानकर एठी आउथरे रिवीजन हे जाइतिबो जो गुडा से भूल करथिबे बा स्किप करथिबे एठू तांकर क्लियर हे जाइतिबो जहां भी ए सेशन रे जहां भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकू नोट डाउन कर देथिबे ठीक अछि तेणी कि फर्दर जेतबेले रिवाइज करिवे निज नोट्स को बिफोर एग्जाम सेगुडा मने रहि जबो जेंति इंफॉर्मेशन ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग